मेरे फादर काफ़ी उनकी हाइट थी, उनकी 7 फुट 3 इंच हाइट है, सेम टू सेम लाइक मी। मेरे डैड के एक दोस्त थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने बोला क्यों ना हम लोग इसको किसी स्पोर्ट्स में डाल दें। तब फिर मेरे को उन्होंने एक अच्छी अकेडमी में मेरे को रिक्रूट किया लुधियाना में, बास्केटबॉल लुधियाना अकेडमी है। वहाँ पे मेरे मिला डॉक्टर सुब्रमण्यम जो हमारे हेड कोच थे, और मिस्टर तेजा सिंह धालीवाल जो हमारे पंजाब बास्केटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। फिर उन्होंने देखा भी हमारे बास्केटबॉल का काफ़ी नाम हो सकता है अगर हम लोग इसको अभी से रिक्रूट करें भी, इसको हाँ भी बास्केटबॉल प्लेयर बनाएं, अच्छा बनाएं, और इसको जो चाहिए इसकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी है वो उसको हम देते रहें। एक्चुअली जो असली लाइफ थी ना मेरी, 2005 से लेके 2010 तक मैं पहले तो पहले 2-3 साल तो मैं पहले पूरा बास्केटबॉल को सीखा। कभी कभी मेरा मन नहीं लगता, घर जाना, ये करना वो करना, काफ़ी चीज़ें होती थी मेरे लिए। पर फिर उसके बाद मेरे फादर ने बोला भी थोड़ा सा तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, कर जाना सोच, जस्ट थिंक अबाउट योर करियर। सो देन आई जस्ट स्टार्ट माई करियर ओवर देयर। तो बाद में हौली हौली अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मैं इंडिया टीम्स खेला फर्स्ट, लाइक पहली बार आई थिंक आई वाज लाइक 13 years old व्हेन आई प्ले फॉर फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल। फिर मैं इंडिया टीम्स खेला, फिर उस तो बाद फिर हौली 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 जिमें मेरी गेम भी बेटर होती गई, हर चीज़ मेरी बेटर होती गई। फिर अमेरिका तो कुछ कोचेस आए, उन्होंने कहा भी हाँ ये बच्चा काफ़ी एक्टिव भी है, हाइट भी है, स्पीड भी है, और ये पावर भी है, वो हर चीज़ हैगी जो असी चाहते हैं एक्चुअली बास्केटबॉल से होनी चाहिए। फिर उन्होंने मैंने होर इंडिया च ही रह के उन्होंने मैंने होर ट्रेनिंग दी। अमेरिका तो कोचेस आए, कोच कैनी नैट आया, बड़े अच्छे NBA प्लेयर भी आए थे, उन्होंने काफ़ी मैनू रिक्रूट किया। फिर उसके बाद आई थिंक 2009 मेरे को सिंगापुर ले गए थे। सिंगापुर में विदाउट बॉर्डर कैंप होता है, वहाँ पे कम से कम 10 से 20 NBA प्लेयर पूरे वर्ल्ड के वहाँ से एक और दो प्लेयर लेते हैं, और सब वहाँ पे आते हैं। फिर उनके साथ एक दूसरे से मैच होते हैं, प्रैक्टिस होती है। फिर उनको जो चीज़ें अमेरिका में हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी, वो चीज़ें हमको सिखाई गई वहाँ पे कि कैसे आप अपने को बेटर कर सकते हैं। 2009 में जो मैं विदाउट बॉर्डर कैंप हुआ था, बिल्कुल ये मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंज था कि वहाँ पे सबके सब जितने भी थे सब इंग्लिश बोल रहे थे, वो अपनी खुद की लैंग्वेज बोल रहे थे। अमेरिका से कोचेस आए, वो भी अपनी इंग्लिश बोल रहे थे, है ना। तो मैंने सोचा भी चलो एटलीस्ट कम से कम देख कर उनको जो वो बता रहे हो। फिर मैंने उस कोच को, जो मेरे साथ एक लड़का था उसको इंग्लिश आती थी, मैंने उसको बोला कि क्या थोड़ी हेल्प कर, कोच को बोल, वो मेरे को डेमो करके दिखा रहे, जैसे वो करेगा वैसे मैं वैसा करता जाऊँगा। तो फिर वो बोला ठीक है हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने उस तरह से मैं अपनी गेम को थोड़ा इम्प्रूव किया वहाँ पे। वो 3 दिन जो थे, और 3 दिन मेरे लिए बहुत महीने थे। वहाँ से जो सीख सकता था वो सीखना था मेरे को। तो फिर मैंने बोला, पहले दिन से बोला मेरे को इंग्लिश नहीं आती, और मैं चाहता हूँ आप डेमो करो, मैं उसको फॉलो करूँगा, जैसा आप कहोगे वैसा करता रहूँगा। मेरे कोचेस मेरे को लेके गए अमेरिका में, मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली। IMG रिलायंस, उन्होंने मेरे को स्पॉन्सरशिप दिया। मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा फिर चैलेंज हुआ। 2009 के बाद जो कैंप लगा था, उसके बाद फिर उससे बड़ा चैलेंज आया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को वहाँ पे रहना था। मेरे को 5 साल रहना था वहाँ पे। 5 साल के अंदर मेरे को इंग्लिश सीखनी है। सभी जो मेरे बास्केटबॉल के मेरे टीममेट्स थे, जो मेरे कोचेस थे, उनसे मैंने घुल मिलना था, उनको बताना था मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, टीम के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी अकेडमी के लिए क्या कर सकता हूँ, है ना, अपने खुद के लिए क्या कर सकता हूँ। वो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा बताने के लिए। बट मैंने भी फिर भी एक्स्ट्रा क्लासेस ली वहाँ पे IMG अकेडमी में। ये तो है नहीं भी हम लोग हर बार जैसे कोई चेंज डिफरेंट मूव करते हैं, क्योंकि हमारे को जो मूव बताया गया हम लोग उसका साउंड होता है, साउंड हम लोग बार बार वही बोलते हैं। उस साउंड से ही मेरी इंग्लिश जो बेटर हुई कि हाँ मेरे को क्वेश्चन ये पहले बताया था, दैट्स मीन दैट, है ना, इसका मतलब यही निकलेगा। तो फिर ऐसे कर करके मैंने अपनी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव की। 2012 में मेरी काफ़ी थोड़ा सा बोलने लगा, 13 में थोड़ा सा और बोलने लगा, 14 में आके मेरी एक्चुअली मेरे को पता लग गया कि असली लाइफ क्या है। तो 2014 के एंड में मेरा ऑलरेडी फिनिश हो चुका था स्कूल, और 15 में मेरा उन्होंने ग्रेजुएशन जो करनी थी, है ना, तो उन्होंने बोला भी ही कैन बी स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। तो एडी जी इंग्लिश हो कॉलेज तक भी इट्स नॉट दैट गुड, है ना,
ਵੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋ send him to college so he can be speak over there, he can be talk to anyone and he can be read anything over there if we go send to college. So that time one of my coach, I told Coach Kenny Nat, he was in India and then he moved to America with an IMG Academy. He's the director over there. Then he told me, he said, Sana, we have an opportunity for you. I know you can go for college, but you are international. So that's the plus point you have. So why not we go recruit you to be NBA and G League or maybe NBA, whatever, huh? But we're not going to say 100% they go pick you, but we go figure out something else. I said, look, end of the day, I'm feeling good. Whatever you go say, I will do it, huh? That's what I did. So that time, my coach, he said, okay, we have another opportunity for you. You came first Indian basketball player from India all the way here. And you've been 5 years in the USA. And you did everything whatever you want. And now we want to make a documentary. So end of 2014 and 15, they start actually documentary. Like I was down at that time. They not told me anything. Then I was like, okay, so let's do it. They come to my home, they meet my coaches, they meet my family, they meet like our best friends back home, and they meet all basketball players, coaches. So they meet everyone, they make nice documentary over there. And then they go back in America. Then I start my real, like, NBA practice, like proper. Then I start my real life in NBA, like 2015, 1st January. Then I have only 4 months get to NBA. Those 4 months is my change life. My coach told me, he said, look, next 4 months is a big decisions coming up. Now you decide you want that or you don't want that. If you want that, you have to become a practice every day and you have to do very hard practice. I got like a couple teams, they will call you to come over and do practice with us. And we don't know how much they want to do hard work, you know. So they push so much hard. They put so much running, so many shooting, so many like dunking stuff, everything, you know. Then I said, okay, I will do it. When I come back from when I drafted in NBA, everything, then I came in my high school. Everyone was so happy. In the 2006 June, that was like a really stressful and exciting moment for me. I was so nervous that time. When they called my name, that was my dream come true and make history of India. So that's the best opportunity ever I had in my life for that time. And when I come back, then my agent, he came to me and said, I want to show you something. Then he showed me one on a phone. They said 1 in a billion. Then I got for my small clip. Then when I watched that, then I said, what does it mean 1 in a billion? I don't know anything that time. He said, how many people in India? I said 1.3 billion. So that's when you are the only one person from there. Get in NBA and you make history of India. Then I was like, okay, that's make me feel more better. So if anyone watching the 1 in a billion, the documentary, they're watching me, they're watching his career. वो अपना खुद दा career देख रहे हैं. असीं जेकर आज इन्नी मेहनत करांगे, ना hard work करांगे, if we go figure out something really hard, if we go find like good coach, good academy, maybe we are the 1 in a billion, maybe 2 in a billion. I got already opportunity in the WWE for like a long time ago. So I told them no because I just entered in NBA on that time. It's been only 1 year, so I don't want to take a risk. That time, AEW doesn't have it. You know, the COVID's happened here. No, you can't play basketball, you can't play anything, so everyone stay home. So that time, my mind is click. Do something different. I have like a 1 in a billion name. Nobody can take it. I make history. Nobody can take it. Why not I go make another history? That's my dream. So that time I was like, okay, I'm finished my basketball. I put my 20 years, I give to everything, and now I have to do something different. Then I called my cousin. I told him, call AEW, talk to them. So I talked to Tony Khan. They invite me over there.
So Tony Khan is a really nice person. He's a very down-to-earth person. I met his dad. He's Punjabi. He was so happy to see me, and I was like, "Thank you so much for giving me opportunity here." And I AW, Coach QT Master is my coach. He trained me almost 9 months. Then my neck is hurting, my back is hurting, my shoulders hurting. I was like, okay, I have to work on that. Then one day he called me. He said, "Sana, your time is coming." I said, "Okay." He said, "You have to attack Somajo." I said, "The people doesn't know me. They don't know anything about me. They just know I'm a basketball player." When I entered that, the lights off. I went over there. I just attacked him. A giant! I know exactly who that. And that's Satnam Singh. The people like, okay, who this guy? I was nervous first. When I entered the ring, my all nervous, everything is gone. I was like mad. I was like an angry face over there. I was ready to, okay, now I will take it right away. Sanjay, Jay Lethal, and Jeff Jarrett, and K. They are my teammates. And someone told me over there that you have the best team ever in AEW. And I know all the fans, everyone, a lot of people doesn't like my team, but I gotta say, we are the best team ever, AEW, so far we have it. Great Khali is different, I'm different. If anyone want to compare to me, my dad. My dad is my hero, he's everything for me. And if anyone say, okay, you look like a Singh, it's my dad, that's it. Great Khali have different look, different style. I'm not going to say he's bad. He's a really good wrestler. He make all Indian wrestlers and the public, all the fans make India proud. That's a really good opportunity, you know. But end of the day, I would say nobody can compare to me with Great Khali. I'm different than everyone, and that's it. I would say for the all youngs, everyone, just keep working hard every day and find your goal first. I'm not going to say any sports, but you need to be at least one sport in your life. Wrestling, basketball, cricket, whatever you want. Anything, you have to do it. If you like wrestling, just focus on that and focus on your study. आसान तो नहीं है, पर इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। Mark Henry is a really nice person, but I really like to be fight with him for one day, but I don't know he will be ready for that. If I really want to be fighting with someone, Big Show. I would say Samjo, and as I like to be, let's say, Mark Henry. Choke slam. Yeah, I like a power bomb, but a choke slam is like a more high, so people are scared from that. I would say Big Show, Sanjay Dutt, Jay Lethal, and Edge. Free time, I have to go to the gym and cook myself and at home, that's all, and watching TV. Red Note, 1 in a billion. And also I would say in Indian movies, I would say Arjun is the like best movie. I like to go to Europe, Dubai, I would say Italy. My favorite actor, Akshay Kumar, because he's a really athlete person and he's very hard worker person. He wake up early in the morning, he do so many things, and he's always activated with sports persons, and he respect everyone.
Katrina Kaif. Katrina Kaif, she's a really good person, and I watch her a lot of movies. She's like a really down to earth, and she not talk too much, you know, and she like to talk to everyone nicely, you know. So that's why I really like her. Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ. They have like all songs, I really like it. And I like Ami Virk, he's a really nice person. And also I like Guru Randhawa. Butter chicken, saag, and makki di rotiyan. 5-star, dairy milk. Pav Bhaji. Samosa.